Kawasan Falls. So let's go. रास्ता इतना सुंदर है तो फॉल कैसे होगा? अभी हम टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर में हैं और कवासन फॉल्स देखने के लिए हमें बहुत सारी वॉक और हाइकिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंट्रेंस फीस और टाइमिंग्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है। कवासन फॉल्स के रास्ते में इस प्यारे से ब्रिज के ऊपर से होते हुए हम पहुंच गए हैं डाइनिंग एंड पिकनिक एरिया। यहाँ पर कुछ शॉप्स है जहाँ से हम एक्वा बैग्स, शूज एंड स्विमिंग क्लोथ्स खरीद सकते हैं। I built this bridge when I was 5 years old. Now I am 40. Yes. So this bridge is 35 years old. So that's our hydroelectric power plant. Go swimming! कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा ना? So this is the second level. The water is so clear. और इस पानी के साथ साथ हम चल दिए नेक्स्ट लेवल की तरफ। और इस रास्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव के साथ कभी थोड़ा नीचे कभी थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हुए हम पहुंच गए हैं लेवल 3 पर। I'm all set to go in the water now.
बहुत अच्छा लगा सारे लेवल्स कंप्लीट करके। और आज का ब्लॉग हम यही खत्म करते हैं। सो बाय बाय।